Welcome to Wednesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। शुक्रिया सुनो। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। India's merchandise exports log a steep rise of over 67% as compared to the corresponding period last year. Sensex falls 85 points to close at 51,849. Nifty remains almost unchanged at 15,576. And rupee weakens by 19 paise against the US dollar. भारत का मर्केंडाइज निर्यात पिछले साल मई की तुलना में इस वर्ष मई में 67% से अधिक बढ़ गया। सेंसेक्स 85 अंक कम होकर 51,849 पर आ गया। निफ्टी लगभग बिना किसी बदलाव के 15,576 पर बंद हुआ और रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर हुआ। In our top story, India's merchandise exports recorded a steep rise of over 67% compared to the corresponding period last year. The Union Commerce and Industry Ministry has informed that in the month of May this year, the total merchandise export from the country stood at over $32 billion. It informed that the figure is nearly 8% higher even when compared to the pre-COVID statistics for the month of May in 2019. Collectively, the merchandise export for the month of April and May this year is more than 12.5% as compared to the corresponding period in the year 2019. The Commerce Ministry also informed that the merchandise imports in the first 2 months of the current financial year has been recorded to be 5.41% less than that of the corresponding period in 2019. However, due to the value of the imports pegged at around $38 billion, the country has registered a trade deficit of over $6 billion. And on this, we are joined by business analyst Jayanta Das. Jayanta, once again, a warm welcome to you on Market Mantra. Thank you. Jayanta, how would you look at the low base effect which is giving rise to a rise in our export figures when you compare it to previous year's performance in exports? And how are you looking at the trade deficit, which is at $6.32 billion, with oil imports actually coming down, making almost a third of our purchases? Yeah. See, I guess obviously there is a low base effect which has given this phenomenal number. But what the government has also done is they have provided a comparison with 2019 levels, and I think it's around 8% jump compared to 2019 levels. And if you see the movement of goods and services to that extent, the European markets as well as the US markets has brought in a strong demand from the from the Indian markets. I mean, across all product deliveries where India exports, in terms of a dominant way, almost all products, the list which I see here, which includes engineering goods, gems and jewelry, textiles and all, they saw major growth. So I think that's something which we look forward to contribute in our in our growth this particular year, specifically after the second wave of COVID, now to some extent tapering down in terms of numbers. That's one part. The other part is in terms of prices. We also have to notice that internationally there is a upward pressure in prices, and that's also another result, another factor by which we saw a rise in overall value of goods, which we saw this particular month. PLI स्कीम जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें भी एक इम्पेटस दिया जा रहा है कि यहाँ पे प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने पर आपको स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेंगे। आपको लगता है कि इसका भी इफेक्ट हम आने वाले समय में देख सकते हैं? देखिए, ये निर्भर करता है कि विदेशी बाजारों में किस हद तक ये जो ओवरऑल जो डिमांड ग्रोथ जो चल रहा है, किस हद तक चल रहा है। बिकॉज घरेलू बाजार में PLI स्कीम का एक अलग से मोटिवेट करेंगे आपको वो सब प्रोडक्ट्स करना, मार्केट में जाके विदेशी बाजारों में जाके अलग से ढूंढना, नया मार्केट, नया सेगमेंट, नया कस्टमर्स एंड ऑल। लेकिन फाइनली सब कुछ निर्भर करता है कि अगले 6 महीने के दौरान विदेशी बाजारों में ये सस्टेन डिमांड होंगे कि नहीं। हमें 2 चीज समझना है कि पिछले 1.5 महीना, खास करके 6 से 8 हफ्ता, अगर हम सिर्फ अमेरिका का बात करें, अमेरिका में जिस तरह का वो लोग प्रोडक्शन सर्ज
उम्मीद कर रहे थे उस तरह का हो नहीं पा रहा था, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स के वजह से। यानी कि लोकल सप्लाई जो उन लोग का है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहा था, जिस वजह से वो लोग जिस रफ्तार के साथ वो लोग आगे जाने का कोशिश कर रहे वो रफ्तार नहीं हो पा रहा है। तो ये सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ ये लोग एशियन मार्केट से निभाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर उनका जो डोमेस्टिक सप्लाई इश्यूज है या जो डोमेस्टिक सप्लाई चुनौती जो चैलेंजेस है वो अगर ईज आउट कर जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि एशियन मार्केट के ऊपर जो निर्भरता इस वक्त जो उनका है वो शायद थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो ये निर्भर करेंगे अगले 6-8 महीना किस हद तक ओवरऑल कोविड का जो इस वक्त प्रभाव जो चल रहा है कैसे उसको पैन आउट होते हैं। और साथ में हमें ये भी देखना है कि एशियन बाजारों में खास करके चाइना हो, इंडिया हो या साउथ ईस्ट एशिया का कुछ बाजार हो, ये जो प्रोडक्शन इंक्रीज का वजह से जो डिमांड इंक्रीज हुए है यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट से, इस देश में वो लोग किस तरह से उन लोगों का सामना कर पा रहे हैं। Jayanto, just looking at our exports, traditionally petroleum products and gems and jewelry dominated. We have engineering also. What does this mean for our factory output, our IIP data, which for the month of March actually went up by 22.4%, and our manufacturing PMI for May was 50.8, lower than the previous month. But how do you see these figures improve or not with what's going on in the pandemic and our export figures? Well, in this particular, wave of COVID pan-India, we have seen there, although there was a lockdown, but manufacturing units were mostly not brought in most of the states any lockdown. So they, unlike, previous year, when in April and May, almost all manufacturing units were asked to shut down. So that's an improvement in terms of where manufacturing has been allowed to continue and there has been international markets to cater to. And it's not a mistaken, last year, as an example, the two-wheeler industry, they exported quite a lot to the South American markets and all, when the whole country was facing a lockdown in India. So I guess there are such pockets of specific performances. And coming back to a question of how much there will be an influence in the manufacturing index in India overall, it would be a very positive influence if this is persistent and it's not just a 1 month or a 2 month effect. So we are quite hopeful and we are quite optimistic that there will be a consistent focus because, as I said, we are now, the whole country is now on a downward trend in terms of new COVID cases and things like that. So hopefully by July, there will be a bit more stability in terms of at least COVID cases while the country prepares for the third wave. But at least there will be some breathing time for the industry as well as for the economy to limp back to normalcy. जंतु, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एमएसएमईज का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में, और अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो उसके इम्प्लीकेशंस एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने सिग्निफिकेंट हैं? देखिए, एमएसएमईज का इस वक्त जो खास चुनौती जो उनका सामने है वो ये है कैश फ्लोज का, और सरकार का तरफ से भी ये प्रयास हो रहा है कि किस तरह का उनका जो भी ये जो इश्यूज है, लोन वापस करना या कैश फ्लोज को मैनेज करना या साथ में जो इन्वेंट्रीज पड़ा है उस तरह को किस तरह से मैनेज करना, वो इमीडिएट चुनौती है। मैं मानता हूं कि एमएसएमई सेक्टर में जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो सीधी तरह से अगर इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट हम देखेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का बात अभी थोड़ी देर पहले अर्जुन ने कहा, लार्जली लेड बाय द एमएसएमई सेक्टर। अगर आप देखें 60 से 70% बिजनेस एमएसएमई सेक्टर के द्वारा चलते हैं वहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी में। तो ये सारी चीजें निर्भर करेगा आखिर में जाके कैश फ्लोज वो लोग किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, बैंक से सपोर्ट उन लोगों को किस तरह से मिल पा रहा है। और ये तो खैर आपने जैसे शुरुआत में कहा कि एम्प्लॉय जनरेशन का किस तरह का ओवरऑल इफेक्ट पड़ सकता है। एमएसएमई एज अ सेक्टर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है, ऑलमोस्ट 40 to 45%, 50% एज अ सेक्टरली वो लोग इंडियन एम्प्लॉयमेंट और लोग बहुत ऑर्गेनाइज क्षेत्र में एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस क्षेत्र में अगर एक्सपोर्ट्स का वजह से ग्रोथ आता है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सीधा उसका असर आएंगे, और खास करके पोस्ट कोविड पीरियड, हालांकि अभी पोस्ट कोविड बोल के कुछ है नहीं, हमें पता है कोविड का शायद वेव लगातार आते रहेंगे और शायद उसका जो सीवियरिटी है उसमें कम होता रहेगा, लेकिन ये सेकेंड वेव का बाद जो फेज अगर हम कहें उसको पोस्ट सेकेंड वेव का जो पीरियड है उसमें अगर हम कहें तो मैं मानता हूं कि शायद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस वित्तीय साल का तीसरी तिमाही से कुछ पॉजिटिव नजर हम आंकड़े के तौर से देख सकते हैं। Jayant, just looking at the PMI for the month of May again, and if you look at how it's computed, it's a weighted average of 5 indices, and employment has 20% weightage in that computation of PMI. How do you see manufacturing jobs being preserved in this particular quarter?
despite what we are seeing with the pandemic and employers are now vaccinating their employees in a phased manner? Well, if you specifically ask for this quarter, obviously there would be some shortages in terms of employment generation because the quarter ends in the next 30 days or so. But if you ask me for this particular fiscal, I do believe there will be some growth factors coming in, assuming that India is poised for a GDP growth of around 10.2% as per IMF revised, as per IMF 10.36% as per IMF data. It might be revised downwards a bit because we faced some initial hiccup in the months of April and May because of the second wave of COVID. But assuming that even if it falls by around, say, 50 basis points to 1%, at a 9% GDP growth rate this particular year, I believe there would be some positive employment generation happening. अभी आपने जैसे कहा कि मई में डेफिनेटली एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स, ऑफ कोर्स द एक्सपोर्ट फिगर्स आर वेरी हार्टनिंग, लेकिन डोमेस्टिक जो सेल्स हैं व्हाइट गुड्स की, ऑटो सेक्टर की, वो सब काफी नीचे आई हैं. तो आपको लगता है कि अब ग्रेजुअल अनलॉक जैसे जैसे होगा और पेंट अप डिमांड के बल पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पिकअप करेगी डिमांड भी, जैसा हमने यूएस में देखा, चाइना में देखा और कंट्रीज में जहां लॉकडाउन लिफ्ट हुआ? देखिए, यूएस में खास करके जो बॉटम 40% ऑफ जो इनकम का जो क्षेत्र है उन लोग को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिला है. तो ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए. यूएस हो जाए, इवन कनाडा हो जाए, जहाँ पे सीधा कैश ट्रांसफर हुआ है उनके अकाउंट में, और वो एक वजह रहा जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर आया है कि वो पैसा कहीं ना कहीं जाके लोगों ने सामान खरीदे है या डिमांड अपना जो चीजें चाहिए पूरा करने का कोशिश की. वो अगर थोड़ी देर हटा के अगर सिर्फ इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो अगर हम पिछले साल जो इंडिया का जो प्रदर्शन रहा, जहाँ पे करीबन 2.5-3 महीने बाद जब मार्केट्स खुले एंड ऑल, तो काफी अच्छा पिकअप हुए थे, अब सबको पता है. और दिवाली का टाइम में भी मार्केट्स में बहुत अच्छा चहल पहल था इन टर्म्स ऑफ डिमांड ग्रोथ कमिंग बैक. और हम लोग ग्रीन शूट्स का बात कर रहे थे कुछ सेक्टर में जो बहुत ही बुरा स्थिति में था. तो इस बार मैं मानता हूं कि अनलॉक का जो प्रतिक्रिया रहेगा वो काफी स्लो रहेगा. पिछले साल जैसे करीबन मई जून से लगातार खुलना शुरू हो गए थे, जो स्टेट बहुत सीवियरली इफेक्ट हुए जैसे महाराष्ट्र वगैरह, इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं अभी भी महाराष्ट्र लॉकडाउन में चल रहा है. और मैं मानता हूं कि मिड जुलाई तक जाके स्थिति का अगर हम नॉर्मलसी का बात करें, जहां पे नॉर्मलसी को हम डिफाइन करें एज जितना भी बिजनेसेस है वो सारे अलाउड होंगे ओपन करने के लिए, अगर उसको हम नॉर्मलसी मान के चले, नॉट ओनली 70-80% ऑफ द बिजनेस हो, तो वैसे स्थिति के बाद अगर आपका पहला वित्तीय साल का 3-3.5 महीना वैसे ही निकल जाता है तो उसमें बेशक एक इफेक्ट पड़ेगा. अब रिकवरी का उम्मीद ये है कि जिसको हम कहते हैं लॉकडाउन फटीग, उस वजह से शायद अगर कंज्यूमर वापस जब मार्केट्स खुलते हैं आके अलग से उनका प्रभाव रहेगा कि नहीं, ये हमें समझना पड़ेगा कि आंकड़े किस तरह से होता है. ये कोई दावे के साथ इस वक्त हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस बार हम सबको पता है कोविड का जो दूसरा वेव रहा बहुत ही सैड, बहुत ही सीवियर रहा और बहुत सारे लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए कंपेयर टू पिछले साल. तो उसका दौरान मार्केट में जो सेंटिमेंटिलिटी है वो कितना तेजी के साथ वापस आएंगे, वो खैर देखने का हम उम्मीद कर सकते हैं. बट लेट्स सी, इसमें कोई इस वक्त टिप्पणी करना मैं मानता हूँ सही नहीं रहेगा. Jayanto, you mentioned about the U.S. economy with the direct benefit transfer by the federal government into the accounts of the citizens. They've also raised the minimum wage from $7.25 per hour to $15 per hour, almost doubled it. And that's also led to inflation of 2% in the U.S. economy. Exactly. What about the inflation figures as far as for the month of May in India is concerned? For April, we have CPI 4.29%. How are you looking at inflation? And is there a fear of stagflation, stagnancy and inflation? Well, the fear of stagflation, it will be actually a real fear because we have heard some industry leaders asking RBI to print notes and put it in the man's pocket so that he can go and buy something. I'm not going to name who are the people who actually have been speaking of this. But yes, if such a case at all happens, then this extra money would chase, the goods available in terms of lesser goods available. And there would be a rise of inflation, whereas the industry per se will not be picking up and we'll have an unemployment scenario staying. So it's a very deadly combination. Coming back to what you said,
at this point of time, the inflationary fears in India are quite real, let me tell you, for two reasons. One is the government is trying to spend quite a lot to keep the economy float up in terms of, the activities, in terms of the spending they are doing in infrastructure and things like that. That's one part of the story. So there will be some upward pressure. The second part is the supply side bottlenecks. Now, once again, compared to last year, the supply side bottlenecks are much lesser right now. But what happens is when the economy goes in for a longer period of closure, if not the roads are being closed, all traffic is on in terms of transport of goods and services, nothing has been stopped. But then there are bottlenecks in terms of markets being closed and things like that. So if the trucks are moving with goods, they have to face some barrier somewhere or the other. Jayanto, the e-way bill figures have actually come down to 3.94 crores as compared to March and April earlier, which is 7.12 and 5.87. Yeah, so even that's come down. That all over proves, to some extent what I'm saying. So as I said, the barriers they face are not just from factory to factory, but then finally these products have to land up in the market somewhere, right? I mean, as a basic example, for example, in Delhi, for example, construction workers are allowed to work as per the first phase of unlock. But when you have the whole markets closed, your cements and your building materials and everything closed. So there is a barrier somewhere or the other created, whereby even if, people who are already having existing stuff, they are working from there, then it's fine. But then the seamless flow of goods and services are somewhere getting hicked up, somewhere getting, bolted up and things like that. So these are the important factors which we should understand, which will pile up. And the other part is the oil prices. That also has been creeping up, as we know. And I believe they would be, contributing directly to some upward inflationary pressure in the months to come. So जयंतो, जो आप बता रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का पूरा जो बैकड्रॉप है, उसमें आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आरबीआई से? परसों उनकी जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाली है उससे? Well, I don't think they would at this point of time, they would like to maintain the hold on status quo sort of a view. I don't think they'll go overboard right now in terms of tinkering with interest rates, if you ask me. आपको लगता है कि उनका स्टांस भी अकोमोडेटिव रहेगा या? See, when I say status quo, so that's what the typical now. No one wants to say status quo. Everyone wants to call it a accommodative, approach to the present scenario, followed by the NPC's, directives and guides. So term it in whatever way you want, but I don't think there will be any tinkering done in interest rates, if that's the direct question which we need to ask. So simply said, you're saying that the repo rate will stay at 4%. That's what I believe. Let's see what the MPC holds its view on in terms of the present status of affairs. But I do believe there is a very real threat of an upward inflationary pressure coming in immediately, triggering from July onwards. कुछ अच्छी खबर है हमारे पास। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद रेलवे ने पिछले वर्ष सितंबर से इस वर्ष मई तक लगातार 9 महीने रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल की। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री शर्मा ने कहा कि 2020-21 में अब तक के सबसे अधिक 1,233 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई। 9 महीने कंसेक्टिवली रिकॉर्ड फ्रेट लोडिंग के जो फिगर्स आए हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, ये क्या दर्शा रहे हैं इकोनॉमी के बारे में? वेल, अगर गुड मूवमेंट हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। वन इज टू सम एक्सटेंट जहां पे इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत डिमांड बढ़े है पिछले दौरान। आई मीन, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो कुछ महीने पिछले वित्तीय साल का, दे हैव सीन सम गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये फिगर्स अभी उसको मोरल सपोर्ट करके आपने बताया। और दूसरी बात ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं जिस तरह का, जैसे अर्जुन ने भी कहा, ई-वे बिल का जो ओवरऑल कलेक्शन में गिरावट आया है, तो वो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं रेलवे जाके उसको पूरा करने का कोशिश किया है। शायद कुछ इंडस्ट्री में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आया जहां पे वो लोग प्रेफर किए थ्रू रेलवे अपना सामान भेजना, बिकॉज कंसिस्टेंसी, स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी इट वॉज मच फास्टर गिवन द ओवरऑल सिनेरियो इन द मार्केट। सो आई गेस जो आंकड़े में जो बढ़ोतरी हुए हैं अच्छा है, लेकिन अच्छा का जो वजह है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप होने की वजह से। अब ये देखना पड़ेगा ये सस्टेन हो पा रहा कि नहीं इस साल। आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की थी, तो आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस दिया गया था बजट में, उसकी जो फ्रंट लोडिंग है वो की भी जा रही है और उसको आगे किए जारी रखना बहुत जरूरी है?
देखिए, सिर्फ जरूरी नहीं है, आवश्यक है, मैं मानता हूँ। और साथ में ये भी हमें समझना है कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम जब गवर्नमेंट का रहा, आप देखें इस बार स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट कोविड के दौरान जो पिछले साल का हालत हुआ था, जहां पे ऑलमोस्ट इंडेक्स 26,000 पॉइंट में जाके गिरा हुआ था, तो उस तरह का स्थिति नहीं बने हैं। 48-49 लेवल्स तक स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट मेंटेन किए हैं। और इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, जहां पे आंकड़े धीरे धीरे देश में कम होना शुरू हुआ, तो इस वक्त करीबन 51,000 लेवल्स भी है। तो इसका फायदा मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को उठाना चाहिए कहीं ना कहीं। जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो उनका रोड मैप है, वो अगर थोड़ा सा स्पीड अप करके दोबारा वापस लेके आता है बैक ऑन ट्रैक, तो वहां से जो अर्निंग्स होंगे वो अर्निंग्स दोबारा सरकार अपना स्पेंडिंग में यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इस तरह की स्थिति में। जैसे मैंने कहा, इस तरह का जो माहौल है उसमें गवर्नमेंट का पैसा का कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में अगर स्पेंडिंग पे वो लोग एक मोमेंटम किसी न किसी तरह से अगर जारी रखते हैं, तो वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट काफी लेके आता है। और हम सबको पता है, फिक्की का भी अभी परसों रिपोर्ट आया था कि पॉजिटिव सेंटीमेंट बिजनेसेस में काफी गिरावट आया है। तो यहाँ पे सरकार का चाहिए कि कितना भी आपका खर्चा हो, कम से कम स्पेंडिंग को एक स्तर पर अगर मेंटेन करते रहे, तो वो पॉजिटिव सेंटीमेंट उतना ही जल्दी वापस आ सकता है। और आपका पास पहला तिमाही तो ऑलमोस्ट खत्म है, कम से कम तीसरा तिमाही से ये पॉजिटिव सेंटीमेंट के द्वारा अगर ग्रोथ वापस आता है, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। आपने बात की शेयर बाजार की, तो उस पर नजर डाल लेते हैं। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स आज मामूली गिरावट पर बंद हुआ और निफ्टी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.16% की मंदी से 85 अंक कम होकर 51,849 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी केवल 1 अंक बढ़कर 15,576 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां अच्छी मजबूती थी और प्रदर्शन सेंसेक्स से कहीं बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.75% के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.29% की वृद्धि दर्ज हुई। Sensex at the Bombay Stock Exchange has slipped 85 points or 0.16% to finish at 51,849. Nifty at the NSE added 1 point to remain almost unchanged at 15,576. The mid-cap index surged 1.75% and the small-cap index climbed 1.29%. Jayant, very briefly, if you look at the top gainers, it were the PSU banks and auto ancillaries. And we see the figures of Motherson Sumi, which was very positive for the fourth quarter, even though it went down slightly. But this is in the backdrop of domestic auto sales for passenger cars, two-wheelers, commercial vehicles and tractors all coming down month on month. So what's the outlook for auto and auto ancillary? Well, specifically for auto ancillaries, let's not forget most of them are major exporters. And the US and the European auto manufacturing hubs, while they have opened up, but their domestic ancillaries are not leading to huge supports in terms of production. So there is a glitch, as I told you in the initial part of the discussion. I believe the major gain in at least the auto ancillaries in terms of stock prices, in terms of interest, is because of that particular flow. Now coming back to the domestic auto sector, it's still going through a bad run, and the auto sector bad run has just not started because of COVID. It started much earlier for them. And the increase in their input prices over the last 6 to 8 months is further going to dampen the overall comeback, if we call it, of the auto sector. It's a tough call to see how the auto sector pans up in the next 6 months to 9 months. एंड ओवरऑल अब बाजार के क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? नियर हाईज पर है निफ्टी, अभी ऑल टाइम हाई पर था। आज मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में तेजी आई है। देखिए, इस बार जैसे मैंने कहा, सेंसेक्स में करीबन 51,000 लेवल्स या 51,000 लेवल्स में अगर सेंटर सस्टेन करता है तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, खास करके ये देखते हुए कि देश में कोविड का जो आंकड़े है वो गिरावट का दौर में है इस वक्त। और इस वक्त यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाए, और वैक्सीनेशन का जो पॉलिसी है, हम सबको पता है, मई में कहीं ना कहीं जाके वैक्सीनेशन का जो दौर चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत उसमें कम हो गया। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि जून का 10 तारीख के बाद फिर से ह्यूज सर्ज वैक्सीनेशन ड्राइव फिर से देश में शुरू होने वाला है। प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ रहे हैं, तो उसका साथ साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में दोबारा अगर इस स्टेज में 51,000 के करीब लेवल्स होल्ड करता है स्टॉक मार्केट, और ओवरऑल आरबीआई का एक अकोमोडेटिव पॉलिसी रहता है, तो यहाँ से क्षेत्र विशेष सेक्टर्स में बैंकिंग वगैरह में स्टॉक मार्केट का काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है।
आइए चले करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर होकर 73 रुपए 9 पैसे प्रति डॉलर पर दर्ज हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.41% बढ़कर 90.20 पर पहुंच गया। और रुख करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, तो एशिया के शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला था। हालांकि मई में अमेरिका की विनिर्माण गतिविधि बढ़ने के आंकड़ों से निवेशकों की धारणा को बल मिला और शेयर बाजार 3 महीने के उच्चतम स्तरों के करीब बने रहे। आने वाले हफ्तों और महीनों में अपनी नीति पर अमरीकी केंद्रीय बैंक की संभावित योजना पर संकेतों के लिए निवेशकों की नजर शुक्रवार को जारी होने वाले अमेरिका के रोजगार आंकड़ों पर टिकी रहेगी। जापान का निक्केई सूचकांक 0.5% बढ़ गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.1% की वृद्धि हुई। उधर सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक दोनों में 0.8% की गिरावट रही। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.6% का नुकसान दर्ज हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान हल्की तेजी थी। लंदन के FTSE और फ्रांस के CAC दोनों में 0.3% की बढ़ोतरी थी और जर्मनी के DAX में 0.1% की वृद्धि थी। In the U.S. market, the 3 major U.S. stocks are traded in a narrow range and ended almost flat yesterday. The Dow rose witnessed marginal gains while S&P 500 and the Nasdaq closed with marginal loss ahead of a week packed with major data that is expected to shed more light on the path of inflation. Latest data showed U.S. manufacturing activity picked up in May as pent-up demand amid a reopening economy boosted orders, but unfinished work piled up because of shortages of raw materials and labor. The Dow Jones Industrial Average gained 0.1% while the S&P 500 and the Nasdaq Composite Index both ended 0.1% down. Very briefly, what is the Fed policy going to be? Are they going to continue with the bond buying program and keeping interest rates at the yield at 1.6%? Jayanta, I hope you're still with us on the program. I missed out the last part of the news which you read. Hello? Yeah, I read the index figures. My question is, what is the Fed action going to be? Very briefly. Well, I guess they are, looking forward for the, upward inflationary prices, but at the same time they issued an advisory. It's going to be a short-term effect, not going to last beyond a few weeks. Well, let's have a look at the oil market now. Oil rose today, supported by an OPEC Plus decision to stick to its plan to restore supply to the market gradually and by the slow pace of nuclear talks between Iran and the U.S. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $71.10 per barrel, while WTI crude prices were around $68.40 per barrel. Again, very briefly, India has been attempting to hedge its position by not buying from Saudi Arabia, cutting almost 1/3 and attempting to buy from the U.S. and also looking to enter into term contracts with Iran if sanctions are lifted. Yeah. What is your view? Very briefly. Well, I guess it will be a good point if they are able to, corner that particular, post-sanction thing with the Iran deal. And it will, to some extent, soothe down our fears of international oil prices. But having said so, I don't think there is much scope of a headroom of rise in oil prices in the next 5 to 6 months. आइए अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर। रुपए में कमजोरी के बीच सोने का मूल्य 80 रुपए बढ़ गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में नरमी थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 49,075 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि ताजा रिपोर्टों के अनुसार चांदी 160 रुपए सस्ती होकर 72,090 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य कम होकर $1,899 प्रति आउंस पर आ गया। चांदी भी गिरावट के साथ $27.90 प्रति आउंस पर दर्ज हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंतो आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. India's merchandise exports log a steep rise of over 67% in the month of May compared to the corresponding period last year. Sensex falls by 85 points to close at 51,849. Nifty remains almost unchanged at 15,576. And rupee weakens by 19 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.